Welcome to our channel Margin Tech Guys, and what we are going to do is HTML in a hurry. Just हम एक HTML का पेज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि what is HTML and what are the basic requirements of HTML कि HTML की basic requirements क्या है एंड थ्रूआउट हम एक अपना पहला वेब पेज बनाएंगे जो कि हमारा बेसिक ऑफ HTML होगा. In that we are going to do nothing extra advanced and yes, one of the thing which is prerequisite जो कि आपको चाहिए इससे पहले वो मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि if you are a beginner then yes it's for you, and if you are advanced from beginning topics then you should have to be in that and yes, advanced topic is our next part, so we will continue from here. Welcome guys, this is our index.html page in which we are going to cover our head, body, HTML, and before that we are going to take some references कि what we are learning and what the structure we are going to understand. हम क्या समझने वाले हैं और हम क्या सीखने वाले हैं. हम पहली चीज़ व्हाट इज HTML समझने वाले हैं. व्हाट इज HTML की डेफिनेशन क्या है? इट्स जस्ट अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इफ आई टॉक यू अबाउट दैट लैंग्वेज तो ये हमारा एक स्क्रिप्टिंग है. जस्ट दिस इज अ स्क्रिप्टिंग बाय विच जिसके थ्रू हम एक वेब पेज को from a web page we are able to connect another page. हम दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए थ्रू दिस वन पेज यूज करते हैं. एंड ऑल्सो फॉर आर कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है जो हमारा पेज पे डेटा रेंडर होगा उसके उस डेटा को रखने के लिए जो हमारे को एक प्री सेट चाहिए. पहले से एक प्री डिफॉल्ट सेट बने हुए हैं कि लाइक अपने को कोई चीज़ चाहिए, मेरे को ये टेक्स्ट चाहिए. फॉर दिस टेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट element or that particular attributes or that particular syntax what we are going to use in that is our HTML. Okay, and इसका पर्पस क्या है? द फाउंडेशन ऑफ ऑल वेब पेजेस, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट. दैट्स इट. जो भी हमारा वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर और जो कंटेंट है ये डिज़ाइन करने के लिए मीन्स फॉर डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर एंड फॉर आर कंटेंट. नॉट डिज़ाइनिंग बट अगर डायरेक्टली कहें ना कि अपना एक वेब पेज होता है उस पर मेरे को कुछ कंटेंट रखना है तो उस कंटेंट को रखने के लिए जो फाउंडेशन होता है, जो एक बेसिक सी नींव होती है, एक ज़मीन तैयार करी जाती है कि जिस पे अपना कोई चीज़ स्टैंड बाय कर सके, तो वो हमारा HTML के थ्रू होता है. एनालॉजी क्या है? लाइक द स्केलेटन ऑफ अ बिल्डिंग, इट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर. मीन्स जो अपनी बिल्डिंग होती है उसका जो स्केलेटन मीन्स जो ढांचा होता है, लाइक हमने सरिया दिया या हमने मट्टी पहले हम मट्टी को लेते हैं, ज़मीन खाली करते हैं, देन वहाँ हम सरिया डालते हैं, देन बेसिक सी जो पाइपलाइंस होती है वो बिछाते हैं, देन उसके बाद मट्टी कवर करके देन वो सरिया जो होता है उसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं फॉर मेकिंग फ्लोर्स. तो वो जो एक स्केलेटन तैयार हो रहा है ये हमारा एक एनालॉजी है फॉर using HTML. And what is the visuals? Showing a simple website screenshot and highlights that different section. Highlight the different sections. मीन्स कि जो अपना विजुअल है वो हम अपने आने वाली जो वीडियोस हैं लाइक जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो दैट टाइम हम जो टोटल फाइनल ऑल ऑफ द विजिट देखेंगे वो हमारा विजुअल होगा. ओके, बेसिक्स HTML स्ट्रक्चर इज पहले हमारा HTML4 यूज़ होता था बट अकॉर्डिंग टू नाउ वी आर गोइंग विद HTML5 जो कि अभी needed in every of the HTML. It's not needed actually, it's updated version of HTML4. So we are covering HTML4, sorry HTML5. Okay, doc type tells the browser it's an HTML5 document. HTML4 में हमारा डॉक टाइप हम डिक्लेरेशन कहते हैं बेसिकली इसे. जो हमारा डॉक टाइप HTML है ये हमारा जो टैग है सिंटेक्स है ये वाला, इसको हम बेसिकली डिक्लेरेशन कहते हैं विच इज़ नेसेसरी इन HTML5. इफ़ यू आर नॉट गिविंग दैट तो हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है वो उसे HTML4 की तरह कंसिडर कर लेता है. Okay. What is HTML? HTML is the root element जो कि सब कुछ कंटेन कर रहा है. HTML एक रूट एलिमेंट है जो कि एवरीथिंग वट एवर इन द पेज, जो भी हमारे पेज में होगा वो सारी चीज़ें HTML कंटेन करता है एंड दिस इज द रूट एलिमेंट. ये हमारा एक रूट एलिमेंट होता है इंस्टेड ऑफ, बिकॉज अभी ये भी टॉप पे डिक्लेरेशन है तो दिस इज जस्ट अ डिक्लेरेशन, दिस इज नॉट एन एलिमेंट.
but yes, we are using it as a element. Remember, recalling it again, this is just a declaration, not an element. What is HTML? HTML is a root element containing everything. What is head? Head is for metadata or the information about the page. Just that's it कि head के अंदर हमारे को जो भी पेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या पेज में इंक्लूड करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लाइक अपना पेज का टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, या पेज हमारा किस डिवाइस पे कैसा वैरी करेगा ये हो गया, या पेज का ऑथर हो गया, या पेज में लाइक हम जब एसईओ करते हैं, एसईओ इज अ फर्दर टर्म बट फिर भी कि हमारा मेटा टर्म्स जो होता है वो हमारे पेज को एसईओ रैंकिंग में मीन्स टॉप पे लाने के लिए ऑन सम कंडीशन, अगर हम गूगल पे कोई पेज रेंडर कर रहे हैं तो उस जगह पे टॉप में लाने के लिए हम हेड के अंदर अपना मेटा डेटास को स्टोर करते हैं, लाइक अपना फेविकॉन। फेव आइकन जो होता है वो हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा वेब पेज होता है, वेब पेज पे ये हमारा जो सर्कल बना हुआ है, दिस इज आवर फेव आइकन विच वी आर नॉट गिवन देयर राइट नाउ, बट व्हेन वी आर वर्किंग इन फर्दर हम इसको भी देखेंगे। ओके, देन व्हाट इज बॉडी? द विजिबल कंटेंट ऑफ द पेज मीन्स दिस वाइट स्पेस, ओवरऑल दिस वाइट स्पेस जो कि अपना यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट है एंड इस कॉर्नर तक, below that side and also this side below. This is our corner, and if we say कि this is our whole body, then it's also not wrong कि अगर मैं बोलूँ कि पूरा मेरा बॉडी है तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द विजुअल की जो अपना कोडिंग इन कोड फॉर्मेट, ये हमारा एच का पेज जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। HTML के पेज में हम अपनी लाइंस तो रखते हैं एंड इट्स नेसेसरी इंस्टेड ऑफ दीज टू लाइंस। यहाँ पे क्योंकि अपने जो बॉडी के अंदर होते हैं ये अपना जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अपने को रखना है अकॉर्डिंग टू आवर यूज़, जो हमारे को चाहिए हम वो रखते हैं। एंड दिस टाइटल गोज, जैसे यहाँ माई वेब पेज है वैसे यहाँ माजूम टेक हब, दिस इज माई वेबसाइट्स नेम, एंड माई वेब पेज की जगह पे वो टाइटल है, व्हाट वी आर यूजिंग इज टाइटल, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर दैट। एंड अगेन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग, व्हाट इज these थिंग्स कि ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली टैग्स? टैग क्या होता है? इफ आई एम कॉलिंग लाइक HTML, तो बिटवीन दीज टू क्योट्स, between these two angle brackets, whatever the thing we are using, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं between these two quotes, अभी वो मेरा एंकर टैग हो, एंकर के लिए हम ए यूज़ करते हैं, या हमारा हेड हो गया, या हमारा बॉडी हो गया, या हमारा पैराग्राफ हो गया, या हमारा H1 हो गया, वट एवर द थिंग मीन्स टोटल ओवरऑल, यस वी आर गोइंग टू चेक इट लेटर इन आवर स्टूडेंट वीडियोस, बट जो भी हमारा यहाँ पे कंटेंट आएगा जो इस दो एंगल ब्रैकेट के बीच में होगा वो हमारा एक टैग होता है। ओके, तब तक के लिए हम इसे HTML कर देते हैं एंड आगे यस फर्दर HTML, the root element of an HTML page, all other elements are descendants of this tag, जो भी हमारे other elements होते हैं वो हमारा HTML पेज जो है रूट एलिमेंट उसके अंदर डिफाइन होते हैं। ओके, वो सारे उसके डिसेंडेंट्स हैं। हेड के अंदर हमारा क्या कंटेन होता है? हेड कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट सच एज टाइटल। सेम अगेन गोज गाई, यहाँ पे सेम अगेन वही चीज़ होती है कि हमारा contain meta information about the HTML document or the web page which we are going to make through HTML। वो हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट हमारा वेब पेज की तरह वर्क करता है, जिसमें हमारा हेड के अंदर टाइटल, कैरेक्टर सेट, लिंक्ड स्टाइल शीट और our linked JavaScript sheet or extra any other things what we use for making our web page visible to others, and also in growth terms like SEO are included in in head tag। Okay. This information is not displayed on the page itself। ये जो information होती है ये पेज में खुद डिस्प्ले नहीं होती है, पेज के अंदर ये डिस्प्ले नहीं होती है, मीन्स
कि इफ आई एम व्यूइंग अ वेब पेज, अगर मेरा ये वेब पेज है तो इस वेब पेज के अंदर मेरा जो भी एच टी एम एल के अंदर जो हेड टैग है, इन एच टी एम एल टैग मीन्स इन रूट टैग, जो भी मेरा हेड टैग है, हेड टैग के अंदर मेरा जो भी डेटा है, वट एवर द डेटा इन दिस हेड टैग, इट्स नॉट विजिबल ऑन द वेब पेज, ये हमारे वेब पेज पे विजिबल नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ आवर टाइटल, एंड टाइटल इज ऑल्सो नॉट विजिबल ऑन आवर वेब पेज, बल्कि वो हमारे टाइटल मीन्स हमारे टाइटल की जगह ही है ये, एंड इन द टॉप ऑफ द पेज, so this is our web page title, so we can't replace it. Yes, we could change it but can't replace it. And like अपना UTF-8, this is the character set what we are using across globally, कि इंडिया में हम when we are using India in India and in English, that is UTF-8 is character set. We are discussing that more about that thing in further videos, but अभी के लिए इतना ही रखते हैं कि हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल होता है, मेटा कैरेक्टर सेट होते हैं, then we are going through our body. What is body tag? Body tag contains the visible page content, जो हमारा पेज विजिबल होगा उसके कंटेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं, वट एवर द थिंग वी आर गोइंग टू शो टू आवर यूजर इज इन आवर बॉडी, टेक्स्ट, images, videos, headings, or any of the things what we are going to show the user, ये हम आगे अपने जो वेब पेज अभी बिल्ड करेंगे तो उसमें देख लेंगे, ओके। एंड ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे सेम ये मैंने क्लियर कर दिया। एंड यस, वन मोर थिंग कि व्हाट इज H1, H1 इज आल्सो आवर टैग, टेक्स्ट कंटेंट टैग्स। एंड सेकंड थिंग, ये टेक्स्ट कंटेंट टैग्स क्या होते हैं, H1 से H6 तक, फ्रॉम H1 टू H6। गाइज वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर इज कि अभी तक आप बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स जो भी आ रहा है इसको टैग्स बोलते हैं, एंड यू आर क्लेरिफाई विद दैट दीज आर द टैग्स, these are the tags, okay। text content tags, H1 से H6, this is the heading tags which we are used to put some heading, हम heading tags को कुछ headings रखने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अभी मैंने एक पोस्ट लिखा है, अगर मेरे को पोस्ट में हेडिंग चाहिए तो मैं पोस्ट की जो मेन हेडिंग लाइन है उसको H1 में रख सकता हूँ, एंड जो पोस्ट की सब हेडिंग है उसको H2 में, एंड सब हेडिंग्स ऑफ सब हेडिंग है तो मैं उसको H3 में रख सकता हूँ। सेम लाइक अ बुक, अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक में एक चैप्टर होता है, चैप्टर का जो नेम होता है वो हम H1 में रख सकते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर के अंदर लाइक मेरा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 की हेडिंग मैंने H1 में रखी है। अभी चैप्टर 1 में मेरा एक कंटेंट है 1.1 या 1.2, मैं उसको सब हेडिंग में रख सकता हूँ उसकी हेडिंग को। एंड देन मेरा 1.1.1 है, मीन्स थर्ड एलिमेंट जो आ रहा है मेरा एक ही चैप्टर के अंदर, थर्ड ऑन दी थर्ड डिसेंट्स, अभी मेरा तो H3 में आएगा, मीन्स H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये 6 तरीके के हेडिंग्स होते हैं विच वी आर यूजिंग इन आवर वेब पेज टू मेक आवर यूजर्स interactive, and also it's for our SEO purpose, so इसके अपने perspective होते हैं which we are not going to clear in this video, uh, because this video is just we are going to take a overlook of what is HTML in a hurry, means in a fast way, और इसके आगे हम मूव ऑन करेंगे फिर CSS पे। तो H1 represents the most important headline, while H6 represents the last and least important, जो कि हमारा H1 है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है, एंड जो H6 है H1 से H6 तक आते आते इट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड देन गाइस जैसे कि ये देख सकते हैं H1, H2 एंड H3, अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि H1 मेन हेडिंग है, देन सब हेडिंग है, देन सेक्शन हेडिंग है। तो इट वुड अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स वाज हेडिंग, सब हेडिंग एंड देन सेक्शन सब हेडिंग। देन वी कम टू पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, जब भी अपने पास बहुत सारा लेटर्स हो गया, लाइक अपने बुक में होता है ना, हम बुक में क्या यूज़ करते हैं कि अपना एक बुक होता है, बुक में एक पैराग्राफ लिखा होता है, तो फॉर दैट पैराग्राफ वी आर यूजिंग P tag. This is a paragraph of a text. This is a paragraph of text. Actually, this tag name is P tag and used for text, which is a group of text जिसमें हम अपना फुल लाइक
multiple sentences, it contains multiple sentences. So हम एक पैराग्राफ में मल्टीपल सेंटेंसेस रख सकते हैं. Anchor tag, what is anchor tag? Anchor tag creates a hyperlink to another web pages or resources. What is anchor tag? Anchor tag जो है basically creating a hyperlink. What is hyperlink? Hyperlink is just a link by which we are able to click and navigate to we are able to navigate to other page, other web page, or other resources. Means pages, web pages, and other resources. Yes, both, uh, all of the threes are possible with this anchor tag. This is an example of anchor tag where which we are using anchor tag and then href, which is for location, and then in string, after a equal sign in string, we are put some example of link which we want to see. Like अगर मेरे को गूगल चाहिए तो मैं यहाँ पे गूगल कर सकता हूँ google.com, and when we click on visit example, then the time it will took us from where this is rendering, जहाँ पे ये दिख रहा है मेरे को एंकर टैग ऑन वेब पेज. एक्चुअली में एंकर टैग पूरा नहीं दिखता है, बट जस्ट these two things which are visible on web page, and this anchor between these two एंगल ब्रैकेट जो भी होता है गाइस, वन मोर थिंग कि जो भी इस टैग के अंदर होता है बिटवीन दीज टू एंगल ब्रैकेट्स दैट आर नॉट विजिबल टू आवर वेब पेज. मीन्स अगर हमने आफ्टर दैट एंगल ब्रैकेट वी यूज इंस्टेड ऑफ सिंगल एलिमेंट एंड वांट टू यूज दैट कि अभी मेरा ये भी यूज हो जाए, तो if visit is a tag, then we have to make it close, and this is mandatory. You can't be able to write any of a html without any closing angle bracket, so it's mandatory. Make it sure. Okay, now what is span element? Span, inline container, used to mark up inline container used to mark up a part of a text or a part of a document. It has no required attributes, but styles and classes are common. ठीक है, inline container होता है. What is span? Span is also like a paragraph tag, but paragraph and span. Span जो होता है हमारा एक inline container होता है instead of paragraph. जो हमारा span है ये एक inline container है जो कि हमारा used to mark up a part of a text. एक टेक्स्ट के पार्ट को मार्क करने के लिए, और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो एक डॉक्यूमेंट है उसके कुछ सेक्शंस या कुछ मिनिमम एलिमेंट्स को मार्क करके फॉर लुकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट एलिमेंट in whole document, when we required to do something which is not in regular basis, not in regular fonts, not in regular condition, that time we are using span element, span tag, sorry. It has no required attributes. इसके कोई ऐसे required attribute नहीं है कि इसमें आपको ये चीज़ देनी ही देनी है. But yes, you are able to use styles and classes which are commonly used in every of the tags. So here, like an example, this is the paragraph tag, and in that paragraph I want to use red in red color. So what I do is this is my paragraph tag where this is the opening of the paragraph, this is the closing of the paragraph, and I want this red in red color. Okay, I want this red in red color. So I basically give span tag and style color equals to red, color colon red. And yes, one more thing, when you are applying the css in inline properties as inline properties, then you have to make sure that you would give semicolon. It's necessary, otherwise your code will conflict. So कोड में एरर आ सकता है बेसिकली इन हिंदी अगर बोल तो. ओके, नाउ वी हैव सम स्ट्रॉन्ग emphasized or break. What is these three? These three are used for font styling. कि strong बोला means क्या कि define करेगा important text. यूजुअली ये हमारा जो होता है बोल्ड होता है डिस्प्ले इसका. एंड वन मोर थिंग कि स्ट्रॉन्ग की जगह अगर मैं बोल्ड भी लिखता हूँ तो बोल्ड के लिए मेरा बी टैग है ना.
These are bold. What we are writing inside of that B tag is going to be bold. Okay. So as seen as strong and emphasized. Emphasized text is used for doing italic, and yes, instead of emphasized, we are also using italic I for italic. Okay. And when we are talking about BR, it's for breaking a line. When we are in a flow of writing something and we need a break, like when we are working with a paragraph and we have two paragraphs. So first paragraph and second paragraph, and both between both of that paragraph we need a line, or we need a separation. That time we use BR. हमें BR ट्रैक मीन्स लाइन को ब्रेक करने के लिए ये हमारा एक सिंगल लाइन ब्रेक ऐड कर देता है एक्चुअल में. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो ये मेरा एग्जांपल है. लाइक दिस इज माय एग्जांपल, एंड व्हेन आई एम एडिंग दिस ब्रेक, तो बेसिकली क्या होगा, मैंने यहाँ से ओके, this is my example in which if I add break, this is my paragraph where it's starting. This is the this is my BR tag. Okay, this is my first line which is rendering here, and this is my second line which is rendering here. Okay, मैंने इसको हटा दिया. अभी अगर मैं ब्रेक नहीं देता हूँ तो मेरे दोनों जो लाइन है वो कंटिन्यूसली आफ्टर वन बाय वन both will written in my web view. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बी आर, तो लाइक मैंने ये बी आर बीच में ब्रेक टैग दिया है, तो इससे क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा सिंगल लाइन स्पेस है, सिंगल लाइन है पूरी, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वर्ड और सिंगल कैरेक्टर, इट्स अ होल लाइन. सो रिमेंबर इट, रिकॉलिंग इट, whole of a single line comes through a br tag, which is used for break uh, uh, which is used for line break. Insert a single line break. Okay. Then we comes with our third topic, which is list tag, in which we have two types of list. One is unordered list, and other is ordered list. And yes, in ordered list and unordered list, in both we are using li for list item. ul is our tag for unordered list, which comes in bulleted list, or whatever the list style we will choose. And one is on sorry ordered list, so it's a numbered list, means we are able to count that in number or in some format, like I double I, or in romans we are using capital one or capital double one, sorry not one, uh, capital I, capital double I, capital triple I, capital IV, or a small case. It's up to the cases what we want to give. So it's up to us. We will see it again later. Okay. In our current topic, in current video. So we continue with it. Okay. Ally is list item, defines an item within a list. Okay. ये हमारा एक item define करता है. ally जो होता है, either it's ul means unordered list, or it's ol means ordered list. Okay. That we come to our media tags. What is media tags? By which we are able to add our media. Media tags क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने मल्टीमीडिया को, मीन्स what we are using as multimedia, हमारा ऑडियो होता है, हमारा वीडियो होता है, हमारा जो इमेज होता है, these all are our media. Okay. Basically we are using three types of media currently, and regular basis, like अपना audio file हो गया या video file हो गया, what we are scrolling daily in YouTube or anything. And the third one is our image, which is on like Instagram. So these are image tags, video tags, or audio tags, which we are which we are able to see there कि ये क्या होते हैं. And yes, when we are talking about tags, with img used for image tag, video is used for video tag, as same as it is audio is used for audio tag. Okay.
And when we are working with image, then image doesn't have any actual type of uh, what do you say elements, like extra properties. Okay. Like image has source and alter conditions, but when we are working with video, we have one extra parameter which is controls. And also with audio we have controls, because image isn't that thing कि जिसको हम आगे पीछे कर सके, लाइक अपना ऑडियो हो गया, ऑडियो को अपने को सुनना है, ऑडियो सुनने के लिए मैं क्या करूँगा, इफ़ आई वांट टू रिपीट द ऑडियो, आई विल रिपीट इट, बट इफ़ आई वांट, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियो आधा चल चुका है अभी, मैं उस आधे वीडियो को या ऑडियो को वापस थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, देन वो जो कंट्रोल आता है अपने पास कि अभी उसको टच किया हमने, थोड़ा सा बैक ले गए, तो दैट वाज द कंट्रोल्स व्हाट वी आर प्रोवाइडेड थ्रू वीडियो और ऑडियो, in which if we are adding video, then video have their own tag and their own semantics for sourcing that video. And we are, if using audio, then we have other source semantic which we have used for sourcing our audio. Then we are going with structural tags. What is structural tags? Basically, these tags are used to define sections and structure of the HTML document. ये हमारा जो HTML पेज होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रॉपर वे में डिफाइन करने के लिए, कि अभी हम ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी, कि अभी मान लो मेरे को कुछ ऊपर नीचे करके यूज़ करना है, मैंने बोला मेरे को HTML चाहिए, उसके बाद मैं हेड रखूँ या बॉडी रखूँ, तो दिस वाज द कंडीशंस वेयर वी आर मेट टू आवर रियलिटी, कि अभी मेरे को मेरी कंडीशन ये है, एंड व्हाट वी नीड इन रियलिटी इज कि मेरे को एक आउटपुट ऐसा चाहिए, बट इफ वी आर नॉट फॉलोइंग आवर स्ट्रक्चरल टैग्स, then we are not able to define our sections properly, and अभी उसके बाद क्या होगा कि कोड हमारा फट जाएगा, और उसके बाद फिर हम यही डिसाइड करते रह जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू चेक और व्हाट वी आर गोइंग टू मेक एंड व्हाट द आउटपुट इज। तो जो हम बनाने जा रहे हैं और जो हमारा आउटपुट है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, वो चीज़ हम नहीं कंसिडर कर पाएंगे, और वो चीज़, इस चीज़ के लिए ज़रूरत है हमारे को स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होने की। सो what that thing is, we are maintaining with that div, and when we are working with div, they have proper closing tag, like other elements। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कोई भी हमारा डेटा जब रन कर रहा है, तो वो हमारा कोई भी टैग व्हेन वी आर यूजिंग, देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग एंगल ब्रैकेट ओपन एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज, एंड सेम व्हेन वी आर क्लोजिंग दैट tag, then we are using angle bracket open slash and then tag name and then closing tag। एंड बिटवीन दीज टैग्स जो भी हमारा डेटा होता है, एक्स वाई जेड हमारा जो भी डेटा होगा, दैट विल रेंडर हियर। अभी मेरा ये कोई सा भी टैग हो सकता है, इवन इट्स पी टैग, ओके, और इवन इट्स div टैग लाइक अबव, ओके। अभी पी टैग हो गया, चाहे div टैग हो गया, तो इट्स बेस्ड ऑन कंडीशन कि व्हाट वाज द कंडीशन व्हाट वी आर यूजिंग। सो बेसिकली इट्स मैंडेटरी कि व्हेन वी आर वर्किंग विद अ structure, then we need an opening and also a closing bracket, okay, and not actually a bracket, but it's also tags, we are using opening tags and closing tag, हमें जरूरत पड़ेगी अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों की, तो दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी। एंड व्हेन वी आर वर्किंग विद footer or like header or like navbar, what we are using, so these are the examples which you want to see, then you could able to visit that, okay। So header is also an element which represents the header of a section or a page, जिसकी heading हमें represent करना है, then we are able to use it in header। Then if we need something in footer section of the page, then that time we are using footer like copyright। तो copyright के लिए हम paragraph tag में use कर रहे हैं, but where we are using it in footer, ताकि कोई अगर देखे तो वो समझ सके, if anyone goes with our code, तो वो समझ सके कि अपना footer क्या काम कर रहा है, footer where is footer is working। एंड ऑल्सो सेम विद नैवबार, कि अपना कोई नैवबार के अंदर लिखा है, तो नैवबार के अंदर तो ऑब्वियसली लिंक्स होते हैं, एक लोगो होता है, फिर जो अपने लिंक्स होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, वो जो लिंक्स हैं,
वो लिंक्स अगर मैं डायरेक्ट nav में डिफाइन कर रहा हूँ तो व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ इट कि आई एम एबल टू व्यू द कोड विजुअली, कि मेरे को दिख रहा है, मेरे विजुअली आंखों से दिख रहा है मेरे को कि हाँ दिस वाज यूज्ड फॉर मेकिंग अ nav bar. Okay. Same as footer and also same as header. And one more thing, it's also a section. तो जहाँ पे हम sections के लिए बात करते हैं तो sections create करना होता है when we are working with div. Section is a, in our related topic. We are not going with that much deep. So continuing with the docs, coming up with article, it represents a self-contained composition in a document, page, application, or site, which is intended to be independently distributable or reusable. Example in syndications. Okay. What is article? Article represents a self-contained composition in a document. Article खुद में ही एक सेल्फ कंटेंट यानी खुद में ही कंटेंट एक कॉम्पोजिशन होता है एक डॉक्यूमेंट के अंदर, चाहे एक पेज के अंदर, चाहे एक एप्लीकेशन के अंदर, चाहे एक वेबसाइट के अंदर। मीन्स इसका एक खुद का एरिया होता है, खुद का एक इट वाज ऑलरेडी समथिंग विद स्पेसेस और विद सम गैप्स। और जब हम लेटर बात करेंगे बॉक्स साइजिंग पे तो दैट टाइम वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब हमारा एक बॉक्स होता है, बॉक्स की खुद में विड्थ होती है, एक हाइट होती है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिव, तो डिव की कोई हाइट या विड्थ नहीं होती, बट इन आर्टिकल वी हैव height, we have width, we have some special styling of article. When we are applying article tag, that time it already maintained. We don't have to maintain it. Yes, we have to make it stylable, but in necessary we don't. It's not mandatory to give that styles. It already contains some styles. Okay. सेक्शन, व्हाट इज सेक्शन? लाइक ठीक है हम पढ़ रहे थे ना ऊपर सेक्शन, तो उसी को यहाँ देख रहे हैं कि रिप्रेजेंट्स अ थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट टिपिकली विद अ हेडिंग। अभी एक वेब पेज में क्या होता है, एक वेब पेज जो होता है हमारा उसमें मेन में जो हमारा होता है वो एक हीरो सेक्शन होता है। एक हीरो सेक्शन मीन्स जो हमारा सब में पहला सेक्शन मीन्स जो लैंडिंग पेज का फर्स्ट व्यू होता है, दैट इज आवर हीरो सेक्शन। एंड देन उसके नीचे कुछ फीचर्ड सेक्शन होते हैं। लाइक अगर मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो लिंक्डइन में समय पहला हमारा जो होम पेज है वो फीड्स का है। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू आवर प्रोफाइल पेज का सब में पहला सेक्शन क्या है, हमारा सब में पहला सेक्शन की प्रोफाइल की जो लैंडिंग पेज है वहाँ पे हमारी फोटो होती है, सम ऑफ आवर बेसिक डिटेल्स होते हैं, एंड सम ऑफ आवर नीचे अबाउट अस का सेक्शन होता है। या सेम थिंग मैं बोलूँ तो व्हेन वी आर स्क्रॉलिंग आवर इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे होम पेज क्या होता है, हमारा फीड रेंडर कर रहा होता है। एंड व्हेन वी आर वर्किंग ऑन आवर प्रोफाइल पेज, जब हम प्रोफाइल पेज पे क्लिक करते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, तो वहाँ पे हमारे को दिखता है हमारा इमेज होता है, हमारा बायो होता है। देन वी हैव सम थ्री कॉलम्स फॉर पोस्ट, रील्स एंड हैशटैग्स। दैट थिंग इज आवर सेक्शन, कि वो एक सेक्शन में बटा हुआ है। That thing is where we have some title or image or our bio or anything जो कि हमें चाहिए वहाँ पे, तो वो हमारा एक सेक्शन है, ठीक है। Then we comes to our table tag. What is table tags? When we are structuring a HTML page and जब हम बात कर रहे हैं कि टेबल टैग की और हम एक HTML पेज पे काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉर्मली एंड एब्सोल्युटली वी needed to go through with table tag, because अभी टेबल टैग हमारे को एक टेबल प्रोवाइड करता है। लाइक इन एक्सेल शीट, जब हम एक्सेल शीट में काम कर रहे होते हैं, देन वी आर मेंटेनिंग आवर टेबल। व्हेन वी आर वर्किंग विद अ वेबसाइट, दैट टाइम आल्सो वी आर वर्किंग विद सम ऑफ द टेबल जहाँ पे हमारे पास डेटा होगा। बट बेसिकली मैं आपको अगर चीज़ बोलूँ तो जो हमारा वेबसाइट है या वेब पेज है वो टोटली डिपेंड्स ऑन डेटा। अगर आप एक लाइन भी लिख रहे हो देन इट्स आल्सो योर डेटा। अगर आप किसी से कि कुछ मांग रहे हैं then it's also your data। when you are working with audio, video, text, image, anything, that everything is data। and when we are saying कि yes मैं इसको स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो डेटा स्टोरिंग के लिए बेस्ट थिंग इज आवर टेबल। so that time we use table, and in that table what is tr?
tr is used for table raw, defines a raw in a table. raw means जो हमारा समय पहला स्लैंट वाला जो लाइन होता है ना जिसमें हेडिंग रखते हैं, लाइक पहले रख दिया नेम, देन उसके बाद रख दिया। गाइस एक्चुअल में इस चीज़ को समझना कि ये जो मेरा पहला, मान लीजिए कि ये मेरा पहला रॉ का पहला कॉलम है, ये मेरा पहले रॉ का दूसरा कॉलम है। तो दिस इज टेबल हेडिंग, this is also a table heading, but it comes in a single line. This is our raw, this heading, these two headings, ये जो दो हेडिंग है ये मेरे एक ही रॉ में दो हेडिंग है। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हाउ वी आर वर्किंग ऑन अ वेब पेज। वी आर वर्किंग ऑन अ वेब पेज स्लैंटली, मीन्स वर्टिकली। हम तिरछे में तिरछे दिशा में काम करते हैं एक वेब पेज पे, इंस्टेड ऑफ वर्किंग अप टू डाउन, इट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन जो भी हमारा एक स्पेस बनता है दैट इज आवर रॉ। अभी वो हम चाहे एचटीएमएल में देखें, चाहे वो हमारा व्यू जो है एक्सेल में हो, इट्स बोथ आर सेम। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे आप, ठीक है। देन सेम थिंग कि अभी एक टेबल में दो डेटा आ रहा है, वन इज़ फॉर नेम एंड अदर इज़ फॉर एज। सेम थिंग टेबल का डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है, दिस इज इन वन लाइन, दिस इज इन वन रॉ। एक्चुअली एक टेबल रॉ, एक टी आर मतलब एक टेबल रॉ है, उसके अंदर एक टेबल का एक लाइन जो क्रिएट हुआ है इस टी आर से, इससे एक लाइन ये क्रिएट हुआ है जिसमें हम टी एच रख रहे हैं। मीन्स व्हाट इज टी एच? टी एच इज टेबल हेडर, डिफाइंस अ हेडर सेल इन अ टेबल, जो कि हमारा एक टेबल का हेडर जो है, हेड जो है टेबल के अंदर, हेडर मीन्स एक हेडिंग। अभी वो हेडिंग जो है वो एक रो में डिफाइन करने का काम मेरा टी एच कर रहा है, टेबल हेडिंग। एंड व्हेन वी आर कॉलिंग अबाउट टी डी, व्हाट इज टी डी? टी डी इज अ टेबल डेटा। अभी उस टेबल के अंदर जो डेटा आ रहा है व्हाट इज दैट डेटा? ये हमारा एक रॉ के अंदर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन दिस इज द सेम above one line tr creating a table row, second line also creating a table row. In that first row we are using th, means table heading, and table heading, first heading is name, second heading is age, same as td means table definition or table data. First data is John Doe and second data is age 30. These two tr creates two lines in one table. Okay, basically these formats are going like that. अभी मैं ये बोलूँ कि मैं चाह सकता हूँ कि मैं इस चीज़ को, टेबल हेडिंग को टेबल डेटा की जगह कॉल कर दूँ और टेबल डेटा को टेबल हेडिंग की जगह कॉल कर दूँ, तो might be it work, but what was the condition? You are not following the structural tags. You are not following the structural tags. So that was here structural tags opening and closing works. So you have to go with the flow of structural tag. Then we last came up with form data. Okay, what is form data? जहाँ पे अपने को डील करना होता है व्हेन वी आर टेकिंग सम एक्शंस। अभी मेरे पास फॉर्म है, मेरे पास नाम है। ओके, आई हैव नेम, देन आई टेक अ ब्रेक, देन आई हैव one more thing. Yes guys, this label is also same as like paragraph or same as like our h1 or any other text containing element, but this input, this is the main one thing which we are going to discuss later and in depth, is this input tag जहाँ पे हमारे को एक accessibility मिलती है for taking user input। एक यूजर से इनपुट लेने के लिए जो accessibility मिलती है अपने को, मेरे को एक यूज़र कुछ प्रोवाइड करना चाह रहा है, दैट टाइम मैं उससे कुछ अगर लेना चाहूँ अपने वेबसाइट पे, देन हाउ आई एम एबल टू डू दैट इज विथ इनपुट टैग। देन अगेन आई एम टेकिंग अ ब्रेक एंड देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। इनपुट का जो टाइप है वो सबमिट है, वैल्यू जो है वो सबमिट है। ठीक है, इनपुट का अभी ये इनपुट एक बॉक्स है मेरा जो कि जिसकी वैल्यू इफ ऐसे कि वैल्यू मीन्स कि इट विल क्रिएट मी अ सबमिट बटन
एंड ऑन दैट सबमिट बटन जिसका टाइप सबमिट है, on this type, when I am clicking on that submit button, this form, actually this form have a method which is post method, and have action which is submit. And when we are clicking on that submit button, that will take action to a URL. This is actually a URL or the path where we want to take a method actionable. Okay, थोड़ा सा डेप्थ है इसमें समझना, लेकिन इसको कि ये फॉर्म से जब हम काम कर रहे होते हैं, मीन्स कि दिस इज एडवांस टॉपिक, सो आई आल्सो क्लियर यू वन टाइम मोर कि दिस इज एडवांस टॉपिक. जब वी आर वर्किंग, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ फॉर्म एंड टेकिंग एक्शन to submit the data, that means if we are using some methods, and what this method is, we are going to take it in action in later some video, not now because we are not going to use form in the class. Okay, so input, label, and button, these two things are there. Input defines an input. Input defines an input field. It opens up an input field for user input. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफाइन कर रहा है एक इनपुट फील्ड जिसमें यूजर इनपुट कर सकता है. क्या इनपुट कर सकता है? टेक्स्ट, पासवर्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, एंड एनीथिंग व्हाट द यूजर वांट. ओके, जो भी यूजर चाहता है वो अपने इस इनपुट फील्ड के थ्रू वो प्रेजेंट कर सकता है. ओके, what is label? Label is used to define a label for an input element. अभी input element को अगर अपने को कोई label देना है तो yes we are using through it label. And what is button? As likely हर कोई बटन यूज कर चुका है तो you are also clear with that. What is button is? It's a clickable button. जो हमारा बटन होता है हम बटन को क्लिक कर सकते हैं, and in that button we are going to use as it is like control C. अभी मैं बटन इनपुट के इंस्टेड नीचे पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल वी बटन, कंट्रोल वी बटन, एंड दिस इज आवर क्लोजिंग टैग. एंड इंस्टेड ऑफ सबमिट, टाइप इक्वल्स टू submit. Okay, this is our button. Sorry, this is our submit button. अगर मैं ये चीज़ नहीं रखता हूँ, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, this submit button, this submit input, then it also work. Type submit means on click of that submit button we are going to take action of that form. So we, because अब ये चीज़ थोड़ी सी घूम रही है यहाँ पे, तो मैं इस चीज़ को अगेन रिमेंबर इट, रिकॉलिंग इट कि ये जो बटन है या ये जो फॉर्म है, वी आर गोइंग टू टेक इट इन डेप्थ बट नॉट इन दिस वीडियो, so we are going to take it later. And one more thing which is really too much necessary for every developers which who are working on code or who are going to be in code, there is a comment which is not only for commenting anything और कोड से भागने के लिए नहीं है ये, बल्कि comment is really useful when we are dealing with developers, जहाँ पे हम developers के साथ काम कर रहे होते हैं. ठीक है, अभी हम बेसिक में हैं, हमारे पास एक ही हम अकेले सिंगल सोलो डेवलपर है कर रहे हैं, बट when we are working with a team, so that time comments help developers to understand. कमेंट जो है वो हेल्प करता है डेवलपर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो आपका सेक्शन है, व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट दैट सेक्शन या व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर लाइन. if you are able to write a line, then yes, you are also able to know कि what you write in that line. अगर तुम एक लाइन लिखने के लायक हो तो तुम उस चीज़ को समझने के लिए लायक भी हो कि तुम उस लाइन में क्या लिख रहे हो. एंड इफ़ यू आर ऑन दैट फेज कि जहाँ तुम ये समझ सकते हो कि तुमने क्या लिखा है, then yes, it's also been commented because जो तुमने लिखा है वो तुम्हें समझ में आ रहा है. बट डेवलपर को क्या समझ में आ रहा है उससे, वो चीज़ अप टू डेवलपर है, तो समझना इस चीज़ को. ओके, टेकिंग इन शॉर्ट, what is elements? Elements in HTML, an element is a piece of content in an HTML document. HTML डॉक्यूमेंट में एलिमेंट पीस ऑफ कंटेंट होता है. ठीक है, it defines by a start tag, some content, and an end tag.
ये डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है? एक स्टार्टिंग टैग होता है, कुछ कंटेंट्स होते हैं उसमें, एंड एक एंड टैग होता है उसका। मीन्स जो हमारा स्टार्टिंग टैग है वही सेम एज एंड टैग होता है। एंड हाउ बोथ आर डिफाइंड कि वन इज लाइक पी, अपना ये पैराग्राफ ओपनिंग टैग है, this p with this single one line, single one backspace, okay, backslash, sorry. These both are, this is for opening tag, this is for closing tag, and is between these जो भी जाएगा अपना वो हमारा कंटेंट होगा, ओके। वट एवर द थिंग इनसाइड दैट इज आवर कंटेंट। दिस इज आवर p tag, this is our p tag, this is our content, this is our opening tag, this is our closing tag, and same it is this h1 is our opening tag, this is our content, and this h1 is our closing tag, ठीक है? Understand? Opening tag, closing tag, content, opening tag, closing tag, content. Then we comes to our nesting tags and elements. Okay, what is nesting tags and elements? Nesting means placing one HTML element inside another. मैं अगर ये बोलूँ कि तुम्हारी एक शर्ट है, शर्ट में एक पॉकेट है, और पॉकेट के अंदर कोई सामान है, दैट इज you are nesting your pocket into your shirt and something into your pocket। कि तुम्हारे पास एक शर्ट है, उसके अंदर एक पॉकेट दे दिया है, अभी उस पॉकेट के अंदर तुमने कुछ डाला, दैट इज नेस्टिंग। शर्ट से लेके उस सामान तक का आना, ये एक नेस्टिंग हुआ फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, तुम्हारी शर्ट अगर पेरेंट है, तुम्हारी पॉकेट चाइल्ड है, और अभी उस चाइल्ड के जो ग्रैंड चाइल्ड है जो कि तुमने उस पॉकेट के अंदर रख दिया है, लेट्स जस्ट अज्यूम इट कि हाँ ऐसा होता है कि हमने शर्ट पहनी है, शर्ट में हमारा पॉकेट होता है, हमने पैंट पहनी है, पैंट में हमारे पॉकेट होता है। तो हमने पॉकेट में कुछ डाला, तो जो पॉकेट के अंदर गया वो पेरेंट टू चाइल्ड गया, मीन्स फ्रॉम योर पैंट टू योर पॉकेट टू योर जो इक्विपमेंट और वट एवर द थिंग यू पुट इन साइड योर पॉकेट। So that's it. This creates a hierarchical structure. What is this hierarchical structure is कि एक हायरार्की में मीन्स एक फ्लो फॉर्मेट है कि पेरेंट चाइल्ड कोई भी चीज़ जाती है। मान लो अभी मेरे पेरेंट की कोई चीज़ है मेरे पास, मेरे पेरेंट ने मेरे को, ओके, दिस इज द लैपटॉप विच इज़ गिवन थ्रू माई पेरेंट। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक लैपटॉप दिया। अभी इस पेरेंट के जो पेरेंट ने मेरे को डेटा दिया है या जो भी पेरेंट ने मेरे को ये सामान दिया है, इस सामान के अंदर में मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई। मीन्स कि जो पेरेंट है वो मेरे हायरार्की में एकदम टॉप पे है, एंड देन दिस इज द लैपटॉप विच इज अंडर माई कंट्रोल, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने ये लैपटॉप मुझे दिया। अभी मैं इस लैपटॉप का पेरेंट हूँ, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी इस लैपटॉप के अंदर में जाओ, तो अथॉरिटी, व्हाट वाज द अथॉरिटी ऑफ दैट लैपटॉप की जो इसका यूजर है, जो इसका मेन यूजर है, ही वाज द अथॉरिटी ऑफ दैट लैपटॉप, ऑथराइटर ऑफ दैट लैपटॉप। तो अभी जो उनका डेटा है इसमें वो एक हायरार्की में चल रहा है, ठीक है? तो एक पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू देयर grandchild, this is called hierarchical structure, and when it is following in our documents, this is nesting, okay? Proper nesting is crucial for correct element. Yes, this is again too much hard to understand कि जो हमारी प्रॉपर नेस्टिंग होती है ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप होता है। इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर HTML in proper nesting, that time it will obviously overlap जब हम कर रहे हैं, मीन्स कि जब हमारा इनकरेक्ट नेस्टिंग हो रही है या ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोड भी फटेगा और तुम्हारा जो डेटा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यस, ऑन सम केसेस इट विल वर्क, बट अभी वो स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो फ़ायदा नहीं है ना यूज़ करने का, तो इस चीज़ को समझना। ठीक है, अभी मैं बोलूँ कि अभी इस डिव, ये मेरा डिव है, डिव इज़ माई पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, पेरेंट टैग। अभी इस पेरेंट टैग के अंदर मेरा एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है, दिस इज़ माई पैराग्राफ टैग। अभी इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिव रख रहा हूँ। तो दिस डिव, इज इट नेसेसरी? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, बिकॉज हाँ मैं स्पैन टैग यूज़ करना है विच इज़
inline, which is inline. So paragraph having span tag is okay, but div having paragraph and paragraph having that div or section or header or nav, this isn't okay. So we have to go through with nesting कि हमारा nesting correct होना चाहिए. In that incorrect example, the div tag is opened inside the paragraph tag but not closed outside. समझ रहे हो, ये बाहर close नहीं हो रहा है, इसी के अंदर close हो रहा है. This will lead an unpredictable behavior and should be avoided. कि it's not actual should, it's must be avoided. कि आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि you have to, it's must and you have to be avoid. कि जहाँ पे आपका ये कोड है, ये नेस्टिंग जो है ये ओवरलैप कर रही है या इनकरेक्ट हो रही है, तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, अगेन कम्स टू एट्रीब्यूट्स. व्हाट इज एट्रीब्यूट्स? Attributes provide additional information about HTML elements. They are always specified in the start tag of an element and consist of a name and a value. What is attribute? When we are talking about attributes, हमने कोई भी टैग यूज़ करा, लाइक ये मेरा एंकर टैग होता है. एंकर टैग के अंदर हमने लास्ट में जैसे देखा था कि हम यहाँ पे गूगल यूज़ कर रहे थे, वी आर यूजिंग गूगल. सो ये मेरा एंकर टैग है. एंड वन थिंग मोर, दिस इज इन स्टार्टिंग. when we are opening a tag, हम in opening tag we are using attributes, not in closing tag. Again, remember it, recalling it. हमारा opening tag attributes contain करता है and closing tag कोई attributes contain नहीं करता है. It's just simply contain tag name. Okay, href is our attribute name, and whatever the thing we are giving after equal sign, that is our attribute value. Okay, image is our tag, source is our attribute name, equals is used for define that source, the value of this string or this image, which is again our attribute value. Okay, भी सेम इसमें alt में भी है, या alter मेरा attribute name है और descriptive length image मेरा attribute की value है. This width is also my attribute name, this is attribute value, this is attribute name, height, and this is attribute value, which is 300. And some common attributes which we are using regularly in our HTML, जो हमारा HTML कोड में हम रेगुलरली देखेंगे, वह है हमारा href, source, alter, width and height, classes, id, style, title. These are the things which we are going to see in regularly in our HTML. Oh, and something is void element. कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जो कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी है वो सारी देखी किया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज नेसेसरी, बट सम एलिमेंट्स जो कि void element होते हैं which are self closing tags. Okay, what is self closing tag means? Void elements. Void elements, also known as self-closing tag or empty elements, in which we are not providing any data, do not have closing tags, जिसके closing tags नहीं होते हैं. Sorry, it's my fault. Void elements also have data, but it's self-closing tag. कि हमें void element जो होता है, जो self-closing tag है, उसमें हमारा डेटा हो सकता है, बट हमारा वो empty element हो सकता है, बट closing tag उसका नहीं होता है. So what we are doing that thing with that thing is they only have a start tag and usually uses a trailing slash, this backend a backslash. Through this are optional in HTML5. This is optional in HTML5, but yes, we are going to make it habitual ताकि हमारा कोड बाद में कभी एरर ना करे. ओके, एग्जाम्पल बी आर टैग. अभी बी आर टैग हमने यूज़ करा, ऊपर में भी यूज़ करा, तो उसके लिए हमें क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं थी. सेम एज एच आर टैग, सेम एज इमेज टैग. गाइस अभी ये देख सकते हैं कि ये जितनी भी ऊपर चीज़ें लिखी हुई है ना, सभी के एग्जांपल नीचे में दिए हुए हैं, तो यू यू कैन लुक आउट थ्रू इट. ये अभी तुम देख सकते हैं इसमें कि बी आर टैग है, एच आर टैग, इमेज टैग, इनपुट, मेटा लिंक्स, हाउ वी आर यूजिंग. एंड यस, अभी HTML5 में नेसेसरी नहीं है, बट वी आर यूजिंग लाइक दैट. ये हमारा क्लोजिंग टैग है. ओके, एंड इफ यू मेक इट mandate in your practice, so it will be good.
क्योंकि जब हम फ्रेमवर्क्स के साथ काम करते हैं या लाइब्रेरीज के साथ काम करते हैं फॉर मेकिंग फ्रंट एंड, दैट टाइम अपने को इट इज़ नेसेसरी टू पुट दैट closing element, trailing slash. Okay, then we are comes to our entities, which is character entities or HTML entities. HTML entities क्या होते हैं? HTML entities लाइक अभी मेरा, ठीक है, मैं इस पैराग्राफ टैग के अंदर, ये मेरा पैराग्राफ टैग है एक, एंड आई सेड कि मेरे को बोलना है कि दिस इज माय पी टैग। ओके, तो अभी क्या हुआ इसमें, अगर मैं ये देखूँ तो दिस इज माय ओपनिंग टैग, दिस इज माय क्लोजिंग टैग, एंड बिटवीन दैट आई वांट टू प्रिंट दिस पी टैग। लाइक मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पी टैग इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ। देन क्या ये मेरा इस पी को प्रिंट करेगा और इट विल थ्रो मी एन एरर? ये मेरे को ऑब्वियसली जब पी टैग है एंड इट्स आल्सो नॉट अ सेल्फ क्लोजिंग टैग मींस वर्ड एलिमेंट, सो अभी मैंने इसको वैल्यू दे दी है, पैराग्राफ की ओपनिंग दे दी है, पैराग्राफ की क्लोजिंग दे दी है, बट इंस्टेड ऑफ बोथ आई एम यूजिंग थर्ड p element, p tag between these two opening and closing of paragraph, तो ये मेरा वर्क नहीं करेगा। तो फिर इस चीज़ को हम how we protect that thing to be right in our HTML, तो जब हम HTML में राइट कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम इन चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो we have two things. First thing is entity name with ampersand. Okay, what we are doing is ampersand means जो हमारा, अरे यार ऐसा भी होता है। ओके, सिंटेक्स हमारा होता है एम्परसेंट मीन्स एंड का साइन above the button of 7, shift plus, if we click shift plus 7, then जो हमारा एम्परसेंट का साइन होता है वो हमारा एम्परसेंट का साइन, देन एंटिटी का नेम, एंड देन सेमीकोलन, रिमेंबर इट, रिकॉलिंग इट, this semicolon is necessary for using entities. Okay, and same when we are working with entity number, yes it's also working with numbers, so if you remember it, so यहाँ पे भी नंबर से भी हम काम करते हैं, बट अगेन ampersand and hash, these two things are necessary with entity number। जब हम एंटिटी नंबर के साथ काम करें तो हमारा हैश मैंडेटरी है, एंड व्हेन वी आर वर्किंग विद एंटिटी नेम डायरेक्टली, देन दैट टाइम हमारे को हैश की नीड नहीं है। एंड यस, इन बोथ वी नीड दिस सेमीकोलन, remember it, recalling it, this semicolon is necessary in both, and ampersand is also, and when we are working with entity number that time we are using hash, and if you are when we are working with entity name that time we are not using hash। Okay, okay, we are dealing with that line in our project lively. Then we come to our paragraph. This is your example. Yes, we are going with entities in depth right now, so leaving that forward, we are going to element again, recalling one more time. Keyword is elements, a piece of content with start and end tag. Like this is a paragraph tag, it's called elements. And what is nesting? Placing elements inside other elements, placing elements in their parent element is just nesting. Okay, what is attributes? Attributes provide extra information about an element in the start tag. This is called attribute, and whatever the after equal sign is attribute value. What is void element? Void elements which has no closing tag like break or like image. And what is entities? Entities is used to display reserved characters or characters not easily typed, जो characters easily typed नहीं हो सकते हैं या जो reserved characters हैं उनको type करने के लिए we are using entities। And it was with ampersand and semicolon, it's necessary to make it necessary. Understanding these concepts is fundamental to writing correct and well structured HTML
They form the basic for creating any web page. This list covers the major and most commonly used HTML tags. There are other tags, but these are the ones you will encounter mostly and frequently and are essential for building basics web pages. Remember to use these tags semantically, meaning use of them for their intended purpose to create well structured and accessible HTML. Guys, टोटली मिला के इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो अभी तक आपने देखा इतने ऊपर में, ये हमारे कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि यू आर यूजिंग फ्रिक्वेंटली बेसिस व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ वेब पेज। ठीक है, जब आप एक वेब पेज क्रिएट करेंगे तो यू नीड दैट थिंग एसेंशियली and fluently. Okay, and if we are going with that one, this is our HTML page what we are working live on port 54324 54324 54324. This is 127.0.0.1 means my local host 54324 slash index.html. How we are creating, this is our 127.0.0.1 colon 52324 slash index.html. And how we are creating an HTML page. Mm, guys, here we have two pages, index.html and h.html. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे मेरा डॉक टाइप है, इंस्टेड ऑफ वी डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम टेम्पलेट। दिस इज आवर डॉक टाइप, आप लोग देख लेंगे इसको, जो कि हमारा ये डॉक टाइप HTML, दिस इज आवर डिक्लेरेशन, दिस इज आवर फर्स्ट element with tag, element tag, and this is your head tag, this is your head tag, this is your body tag। ये टैग हमारा रिकॉलिंग इट, ये टैग हमारा जो है वो वेब पेज पे शो नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ टाइटल। टाइटल हमारा वेब पेज के टॉप में ही शो होता है एज अ वेब पेज नेम। एंड देन अगेन कम्स अप विद बॉडी, बॉडी हमारा फुल वेब पेज की व्यू पे दिखता है। ठीक है, इफ यू आर नीडेड टू गो विद इट यू कैन गो विद इट, एल्स मैं इसको लीव करता हूँ। एंड दिस इज आवर index.html what we are looking here। Okay, take a view of this one also, no? This is our example page। Okay, this is our example page which comes from text.html। ठीक है, मीन्स गाइस अगर आप इतना लिख लेते हैं दैट मीन्स कि आप एक HTML का पेज रेडी कर लेते हैं ऑन विच यू आर एबल टू वर्क। ठीक है, देन वी आर मूविंग टू आवर वेबसाइट व्हाट ऑन वी आर वर्किंग as HTML in a hurry, building your first web page by Mazun Tech Hub। In that first thing, which is our header, which is our head of the HTML page, is title Mazun Tech underscore hub, which is you are showing here. And then this is our character set, meta character set of a language, and then meta description, keywords, author, viewport, and then we are not going with this style right now। okay, but हाँ we are अभी देखा हमने कि अभी स्टाइल में क्या काम करता है। okay, एक बार देख भी लेते हैं व्यू। बेसिकली दिस इज द व्यू which we are going to just take an example कि अभी ये हम use कर सकते हैं, but we are not using anything in this style। so when we are working with styles we definitely go in depth of it। okay, so for that time we are closing the styles। then हमारा ये चीज़ें गाइस जो है ना, मेटा टैग्स एंड टाइटल्स, दिस इज इन आवर HTML हेड टैग। अगर इसको आप बॉडी में यूज़ करेंगे देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, सो मेक इट श्योर। ठीक है, अब ये मेरा पैराग्राफ टैग है विच इज़ आई वांट टू कवर। गाइस अगर देखेंगे ना तो दिस इज आवर कमेंट, और जो मैं अभी कमेंट्स अनकमेंट कर रहा हूँ दिस इज आवर कमेंट विच इज़ नेसेसरी कि अगर मैंने ये काम किया, मान लो मेरा ये काम था, मैं चाहत रखता हूँ कि ये काम मेरा दिखे,
तो दिखना तो ठीक है, ये तभी तो दिखेगा ना जब मेरे पास होना चाहिए। तो अभी मैंने मान लो यही कोड बनाया था, दिस इज द कोड, मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो यूजर कैन बी विजुअली एबल बाय अनकमेंटिंग दिस कि किया क्या था। तो फॉर दैट थिंग अब कोड रखना इज बेस्ट थिंग। अभी मैं इसको देख रहा हूँ, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ, सेव किया, पेज रन किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे वो लाइन चला गया। बट व्हेन वी आर uncommented that, uh-oh, when we uncommented that and seen that page, so this line is visible to me। okay, इन दैट मैंने क्या किया है, एक HTML के अंदर बॉडी टैग के अंदर h1 टैग रखा है, जिसमें एक एट्रीब्यूट है स्टाइल नाम का, जिसकी कलर एक प्रॉपर्टी है, एक वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, जिसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो ब्लू है। देन अगेन टेक्स्ट अलाइन विच इज सेंटर। दिस इज सम बेसिक ऑफ द स्टाइलिंग, जो कि इट्स नॉट नेसेसरी, बट वो मैंने स्टाइल करने के लिए वहाँ रख दिया है, ताकि यू आर विजुअली एबल टू गेट अ good view। That's it. If you are using and you could write it or copy it. Right? Then what we are having is this one tag. I want to open this one tag, and again guys, जैसे कि H1 एलिमेंट में स्टाइल करा था हमने, इसको थोड़ा सा स्टाइल दे दिया था। एंड अगेन H1 के अंदर क्या है मेरा, नथिंग, एक हेडिंग है विच इज माई टॉप ऑफ द हेडिंग। देन मेरा पैराग्राफ टैग है विच कंटेन्स अ पैराग्राफ। देन मेरा फिलहाल के लिए एक div है। Guys, this is semantically aligned। okay, body, body, opening of body, closing of body, then we have h1, then we have paragraph tag। okay, then we have a div। in that div, what we are doing, we are taking two elements in a div, means these two tags are hierarchical to this div। ये दो जो tags हैं, ये हायरार्कियल है किसके, इस div एलिमेंट के, इस div टैग के। ओके, एंड how it's look like is, this was the section how it was looking like here। then we are going to take a depth। okay, here what we are doing is we are working with ol and an image tag। okay, what is this image is like, this is my image, I could refresh it, this is my image, credit goes to Investopedia, I take that image from Investopedia's website। so I stored it in my assets folder, in my assets folder html.web.wepp, I take it as dot slash assets slash html dot webp, as an alter I take my image to my html logo, not logo, html image। then I took some styling on that ताकि it will look visually good। then ठीक है, अभी तक मेरा ये था। अब मैं इसको ओपन करने की ख्वाहिश रखता हूँ, एंड आई विल गो थ्रू विद ओ एल। व्हाट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं इसको अनकमेंट ही कर देता हूँ। आई एम सेविंग इट, रिफ्रेशिंग इट। गाइस, दिस इज माय वन ऑफ द पेज विच आई वांट कि मेरे को दिखे, इट विल लुक लाइक गुड टू मी। कंट्रोल एक्स एंड आई वांट कि मेरा यहाँ रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। Again refreshed। What is HTML? HTML is a hypertext markup language. This basic scripting language used by a web browser to render pages on the World Wide Web, means www। That's it। Okay. In that ordered list, one more thing lastly which is remaining, if you are able to see where I said OL. OL means ordered list। Okay. Ordered list opening, ordered list closing, this OL tag is here। गाइस आप देख सकते हो ना, यहाँ पे OL पे रखा, ये OL का टैग क्लोजिंग दिखा रहा है, दिस इज द OL टैग क्लोजिंग। हाँ, वन मोर थिंग, इसमें बहुत सिली सा मिस्टेक होती है कभी कभी कि अभी हम जो देख रहे हैं वो कंफ्यूजिंग हो जाता है व्हेन वी आर वर्किंग विद स्टाइल।
Okay, this is our this one li, and this is our this one li means these two are a single block. These two are a single block. These two li means I'm using an ordered list having two list items. One list item contains one bold heading. This is a heading. What is HTML is a heading. By just giving this B, this is what is HTML comes in bold. Okay, this is in bold because I'm using that heading. If instead of this I'm using paragraph. Okay, sorry, my mistake. Paragraph, then it will looks like what is HTML. Okay, guys, you could see the change कि यहाँ पे ना boldness खत्म हो गई है. So I am again changing that to previous one and refreshing it. Again, it's going to be the same. Okay, in that B, if you look at this now, this is 1 and 2. What is HTML is 1, what basics of HTML structure is 2. Where is this coming from? This is coming from this OL, ordered list 1 and ordered list 2. And when I am opening one ordered list first and opening ul is for unordered list. Okay, and what is unordered list is like this circle, small circle one. When we are saying unordered list, this is not in order, this is in some format key. If you are seeing that circle regularly, that means it was unordered. And when you are seeing that one or two, this is ordered. Okay, take it as an understand. Now guys, this is the lesson totally. And yes, one more thing which is left is कि अभी मैंने बोला था कि मेरे को ये use करना है, like paragraph tag use करना है, like this tag. How it was rendering, this is the head. Okay, and when I'm talking about head, this is the head. Okay, I'm opening this single element. What is this? This is the doc type HTML. Okay, I'm going to comment one and opening. अभी मैं ना इसको यहाँ से हटा के इतना ख़त्म कर देता हूँ कि पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको ला के वापस एक टैग में रख लेता हूँ एंड सेविंग, एंड हियर आई एम गोइंग टू रेंडर इट. तो गाइस देख सकते हो नहीं, ये अभी टेल द ब्राउजर इट्स एन HTML5 डॉक्यूमेंट तो दिख रहा है, बट ये इस कॉलन से पहले की चीज़ें नहीं दिख रही है. व्हाई नहीं इट्स नॉट विजिबल? बिकॉज इट्स इन सिंगल ओपनिंग डिक्लेरेशन ऑफ HTML पेज. ठीक है, अभी मैं इसको अगेन इफ आई एम चेंजिंग दैट, आई एम कमेंटिंग दैट वन एंड ओपनिंग दैट थिंग, सेव पेज रिफ्रेश, कैन इट्स अगेन विजिबल. तो आप इस चीज़ को ना एक बार गो थ्रू करेंगे, पर्सनली विजुअलाइज करेंगे अपने एंड से, एंड आफ्टर दैट आप इस चीज़ को क्लियर कर. ओके, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, and if you really like, then share it. Thanks guys.